Okay. Good morning, everyone. Question number 3. We were on to revision of dissolution of firms. Question number 3. Cameras on, everybody. Are we ready? Question number 3. Cameras on. Your faces should be visible. Question 3. Kanta and Shanta were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ठीक है? Kanta and Shanta. And profit sharing ratio is 3:2. Their balance sheet as on 31st March is as follows. Asset side, you have building. Are a bank. Are you going to prepare bank account? Jaldi bolo. हाँ या ना? Yes or no? Are you going to prepare bank account? Yes. So there you will show this as opening balance. Asset है तो opening balance which side? Oh, keep answering. Keep answering. Keep answering. सबसे पहले asset side पे you have bank. I asked you whether you are going to prepare cash bank account. Yes or no? Yes. And if yes, so you will show this as opening balance. Asset है तो opening balance which side? बोलता जाओ. Debit side. Then stock, building, plant and debtors. क्या इनका अकाउंट बनने वाला है? क्या इनका अकाउंट बनने वाला है? स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स? नो. तो ये सब विल बी ट्रांसफर्ड वेयर? रियलाइजेशन अकाउंट. और एसेट है तो विच साइड? डेबिट साइड. Everybody, last is P&L account. Now you tell me, what does P&L account on the asset side mean? P&L account अगर asset side पर दिख रहा है तो what does it mean? What does P&L account on the asset side mean? Past undistributed profit या past undistributed loss? Yes, it is past undistributed loss. और अगर ये लॉस है पहले का, बिजनेस इज गोइंग टू क्लोज डाउन, तो ये अब तो बांटना पड़ेगा. अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. So now you will distribute this to the partners. So partners capital account. I think liability side पे you have current account. So first preference will be partners capital or current. If capital and current both are there, तो सबसे पहले किसको preference देना है? Current account. तो partners current account. और asset है तो which side? Debit side. तो partners current debit.
Now come to the liability side, creditors and bills payable. Are you going to prepare creditors account and bills payable account? No. So where will you transfer these? Realization account. And liability है तो which side? Credit side. Correct? Realization credit. Then capital. Are you going to prepare capital account? Are you going to prepare capital account of partners? Yes. So there you will show this as opening balance. और liability है तो opening balance किस side? Credit side. Similarly, current account. Are you going to prepare partners current account? Yes. So there you will show this as opening balance and liability है तो हमेशा credit पे. And lastly, you have general reserve. What does general reserve represent? What does general reserve represent? It represents past undistributed profit. ये past का profit है, profit. ठीक है ना? And because ये past का profit है, it should be distributed now. In which ratio? Profit sharing ratio. तो ये partners को बांट देंगे. तो पार्टनर्स के कैपिटल में डालूं या करंट में? बिकॉज आई हैव बोथ. एंड इफ यू हैव बोथ, योर प्रेफरेंस हैज टू बी व्हाट? करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट. पीसी मींस पार्टनर्स करंट. नाउ डेबिट और क्रेडिट, लायबिलिटी है तो विच साइड? ऑलवेज क्रेडिट साइड. तो पार्टनर्स करंट क्रेडिट. एनी प्रॉब्लम विद द मार्किंग्स? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. देयर आर मेनी जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है, तो मैं उनको अभी निकालना स्टार्ट कर रहा हूं. मैंने 3-4 बार उनको यहां से ही क्लिक करके बोल दिया है ऑलरेडी. और दूसरी बात, देयर आर सम पीपल जिनके फेसेस नहीं दिख रहे हैं, पूरा ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, उनका कैमरा ऑन होके भी, तो दैट्स नो यूज. यूजलेस इट इज. आई विल हैव टू रिमूव देम आल्सो. बार बार आई कांट आस्क यू टू. फेस नहीं दिख रहा है. 135 आयुष, जीनत जहां, श्रुतिका, ऋषभ. फेसेस नहीं दिख रहा है, सो नो यूज. आई हैव टू रिमूव यू. चलो बाय बाय. एंड जिमित, हमको हाइड एंड सीक नहीं खेलना है, तो बार बार ऑन ऑफ नहीं करना है नोटंकी. And I'm supposed to see your faces, not your ACs and not your ceilings and not your walls. The firm was dissolved on that above date and the assets were realized. मैं कितनी बार बोला assets realized मतलब assets से पैसा आ रहा है. करेक्ट? assets realized मतलब assets से पैसा आ रहा है.
एसेट से पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। देखो पैसा, एसेट बेच के पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट, और एसेट जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, करेक्ट। तो नॉर्मली एंट्री ये होता है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट एंड एसेट जा रहा है गोज आउट क्रेडिट। नॉर्मली दिस इज द एंट्री, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। बैंक अकाउंट हम बनाने वाले हैं, एसेट अकाउंट नहीं बन रहा है। एसेट को कहां ट्रांसफर किया है? रियलाइजेशन। तो इंस्टेड ऑफ एसेट आई विल हैव टू राइट realization account. Is that clear? Fine. So next, Kanta agreed to pay bills payable. Now forget Kanta. अगर हमने बिल्स पेबल पे किया होता तो हम क्या एंट्री करते, ये बोलो। अगर हमने बिल्स पेबल पे किया होता तो हम क्या एंट्री करते? You have done bill of exchange, right? Bills payable account debit to cash या to bank. This is the entry normally we pass. Now problem is in both the accounts. We are not preparing bills payable account. Bills payable has been transferred to realization account. इसलिए bills payable की जगह I will have to write realization account. Secondly, we are not paying, तो हमारे पास से पैसा जा ही नहीं रहा है। कांता is going to pay, ऐसा लिखा है देखो, कांता agrees to pay। तो हमारे पास से पैसा जा ही नहीं रहा है ना, हम तो पे ही नहीं कर रहे, तो बैंक मनी गोज आउट वाला रूल यूज भी नहीं कर सकते। हमारे लिए अगर कांता ने पे किया तो हमको कांता को पैसा देना पड़ेगा, यस और नो। अगर मेरे लिए कांता पे करते हैं तो मुझे कांता को पैसा देना पड़ेगा, यस और नो। यस, तो मुझे कांता को पैसा देने का है, देने का है, तो कांता बिकम्स क्रेडिटर। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, उसको क्रेडिट। कांता कैपिटल क्रेडिट या करंट क्रेडिट, दोनों है अपने पास, तो विच हैज टू बी प्रेफर्ड? करंट अकाउंट। देन क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 28,000, क्रेडिटर्स को पे कर दिया 28,000। ठीक है, नॉर्मली क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो दे सीज टू बी योर क्रेडिटर, एंड व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी क्रेडिटर, उसको डेबिट करते हैं। एंड वी आर पेइंग देम, तो मनी गोज आउट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, तो बैंक क्रेडिट। क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो अब वो हमारे क्रेडिटर्स नहीं रहे, सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको डेबिट। एंड हमने उनको पे किया तो मनी गोज आउट, इसलिए बैंक क्रेडिट। बट द प्रॉब्लम इज बैंक अकाउंट तो मैं बनाने वाला हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनने वाला है। We have already transferred creditors to realization. So instead of creditors, I will have to write realization account. Is the entry clear? Every entry I am explaining again and again, even though it's a revision. And now lastly, dissolution expense pay की है, तो पैसा जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री इज स्टिल दिस सेम। ठीक है, प्रिपेयर करंट अकाउंट, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। वैसे भी पार्टनर्स लोन है ही नहीं। ठीक है, चलो लाइन ड्रॉ करो।
रेडी? अकाउंट्स रेडी है? चलो बिगिन. Asset side we have bank balance 15,500. Opening balance debit side. चलो चलो जल्दी लिखो. आप बाकी पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट वो सब तो लिखते ही हो. वेरी गुड. Be with me now. Then the next four realization debit RD. Stock building plant debtors. And last wala partners current debit 18,000 profit and loss. Partners current account debit. Profit sharing ratio is 3:2. 18,000 3:2. 3/5, 2/5. I get to know immediately as soon as you switch off your camera. So I remove you. Faces need to be visible. Ayush, your face is not clearly visible. Nawa diya lagao. Next, liability side now. Creditors and bills payable realization credit side. चलो लिखते जाओ. Creditors 29,000.
payable 22,500. Then capital 80,000, 45,000 opening balance. Then current account opening balance 11,800, 11,200. Then general reserve 3/5, 2/5, यानी 3:2. Face needs to be visible. Else I will have to remove you. Face needs to be visible. Now this is over. Now assets realized as under. हमने साइड में एंट्री लिख के रखा है. I've already explained you in detail why debit, why credit, what debit, what credit. Entry is bank account debit to realization account. Bank में debit to realization account. Bank debit and here realization credit. See the first point, stock is 25. First point में debtors is 22,500. Plant is 38,000. Building is 1,20,000. Total is how much? If I can't see your faces, I have to put you out. Total is how much? 205,500.
and second effect of that 205,500 here. Don't cry. Here. Someone realized they were thrown out of the lecture. Done. Second point. Kanta agreed to pay the bills payable. Now look here. How much is bills payable? 22,500. Can you see here in the balance sheet? I have highlighted 22,500. And now Kanta agrees to pay that. So entry is realization account debit to Kanta's current account. So realization के debit side पे to Kanta's current account. Bills payable being paid by her. Realization debit. And what credit? Current account credit. Kanta, 22,500. Start writing, Ray. Done. Next, creditors were paid of 28,000. Entry लिख के रखे हैं realization debit to bank account. तो realization के debit side पे to bank account. Creditors were paid of 28,000. Realization debit and bank credit. पहले realization debit करो जल्दी. And bank credit भी करना है. तो चलो come to the bank account and on the credit side buy realization account 28,000. Fast. Done. Next, dissolution expenses are 1,500. Entry realization debit to bank credit. तो realization के debit पे आओ to bank credit. Dissolution expenses 1,500. Realization debit and bank credit. तो पहले realization debit करो. Done. Bank credit. Now tell me, all adjustments are over. Which account should be closed first? 4 account हमने बनाया है. Which account should be closed first? Realization. But do you remember before closing realization account आपको कुछ चेक करना होता है? क्या चेक करना होता है?
whether all liabilities have been paid off or not. Look, in the balance sheet there were two outside liabilities, creditors and bills payable. क्रेडिटर्स जो है वो पे कर दिया है और बिल्स पेबल कांता एग्रीड टू पे द बिल्स पेबल, तो बोथ लायबिलिटीज हैव बीन सेटल्ड, सो वी कैन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट. अगर एक भी लायबिलिटी बच गई होती तो पहले हम उसको पे करते एंड देन वी वुड क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट. अंडरस्टूड? एनीवेज चलो क्लोज रियलाइजेशन. विच साइड टोटल इज मोर? प्लीज चेक. Debit is 2,26,000, I think. And credit is 2,57,000. So credit is more. 2,57,000. So that total I will write on both the sides. और फिर डेबिट में की जो भी चीज है वो सब उसमें से माइनस करो. क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, वो टोटल दोनों तरफ लिखना है एंड फिर उसमें से डेबिट डिफरेंस माइनस करके कितना आ रहा है. $31,000 is the difference. Now, I have some questions. 31,000 जो difference है, this is profit or loss? This is profit on realization. अगर difference credit पे होता तो it was loss on realization. Secondly, ये profit partners को बांटना है, current account और capital account, because we have both. Which has to be given preference? Current account. And profit sharing ratio is 3:2, मतलब 3/5, 2/5. So 31,000 का 3/5. इधर इधर देखने का, बात नहीं करने का घर पे. So, can anyone tell me what is the journal entry for this 31,000? Journal entry. In case journal पूछा होता तो इस 31,000 प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या होता? इट इज वेरी मच एविडेंट कि रियलाइजेशन अकाउंट में एवरीवन रियलाइजेशन के डेबिट पे दिख रहा है कि नहीं आपको ये 31,000. दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट और उसका डेबिट साइड पे 31,000. तो एंट्री आधा तो बन गया. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 31,000 टू कांतास करंट अकाउंट टू शांतास करंट अकाउंट. So here 18,600, 12,400 करंट अकाउंट में डालना, नॉट कैपिटल, डोंट फॉरगेट. डन. नाउ यू हैव टू क्लोज विच अकाउंट. चलो बोलो, अभी 3 अकाउंट बच गया. कैपिटल, करंट एंड बैंक.
कौन सा पहले क्लोज होगा बोलो एवरीवन. यस, करंट अकाउंट विल बी क्लोज एंड करंट अकाउंट का डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड वेयर. करंट अकाउंट क्लोज करके करंट अकाउंट का डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड वेयर. कैपिटल अकाउंट. तो अभी करंट क्लोज और करंट क्लोज करके डाल दो कैपिटल में, शिफ्ट टू कैपिटल. So current account, Kanta, credit side is more. $57,700. उसमें से ये 10,800 लेस करो. 46,900. Shanta also credit side is more. From that deduct the 7,200. Now shift this to partners capital account. Look here, journal entry now. आपको ये दोनों अमाउंट जो सर्कल किया है करंट अकाउंट में डेबिट पे दिख रहा है कि नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के. तो एंट्री विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे आ जाओ अभी. नाउ कैपिटल अकाउंट क्लोज करो. टेल मी, दोनों कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? कैपिटल अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस, not debit, credit balance, because credit side is more. क्रेडिट साइड इज मोर तो इट इज क्रेडिट बैलेंस. और अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो लोग आपके क्रेडिटर है और आपको उनको पैसा पे करने का है, तो उनको पे कर दो. क्या कर दो? पे कर दो. और अगर पे करेंगे तो पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट. चलो जल्दी, बैंक क्रेडिट.
एंड लास्ट में बैंक अकाउंट शुड टैली. Now, first, Rajani, Rohini, and Rani were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 12 was as follows. कितने आदमी हैं? गलत. मुझे यहां आदमी शायद कम दिख रहे हैं. Anyways, there are 3 partners and the profit sharing ratio is 2:2:1. Their balance sheet as on 31st December 12 is as follows. Chalo, move on to the balance sheet. Now, do you remember what happens if any partner is insolvent? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो क्या करने का? पहले तो पूरा प्रॉब्लम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने का, पूरा, एंड इवन स्टार्ट क्लोजिंग ऑल द अकाउंट्स. फर्स्ट पूरा प्रॉब्लम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देने का, इवन क्लोज ऑल द अकाउंट्स. जब सिर्फ 2 अकाउंट बच जाए ना, कैपिटल एंड कैश बैंक, लास्ट में, तब इंसॉल्वेंसी टच करने का, तब तक इंसॉल्वेंसी टच नहीं करने का. आई रिपीट, जब भी कोई भी पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, आई एम टीचिंग यू समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. Whenever any partner is insolvent, first solve the entire question in the normal manner and start closing all the accounts, and only when 2 accounts are left to close, capital and cash bank, that time you will touch insolvency. उसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर को देखो उसका कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस है. नाउ कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस होगा उसमें से कुछ वो दे पाएगा, कुछ वो नहीं दे पाएगा बिकॉज ही इज इंसॉल्वेंट. जितना वो दे रहा है उसका कैश मिला एंट्री कर दो, कैश टू कैपिटल, और जो नहीं मिला उसका एंट्री इज सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या बोला? जो मिला पैसा ले लो, जितना वो नहीं दे पाया इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसका एंट्री विल बी सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट्स ऑल. उसके बाद वापस नॉर्मल. I repeat,
last time, whenever any partner is insolvent, first solve the entire question in the normal manner and start closing accounts, and only when two accounts are left to be closed, that time you will touch insolvency, capital account and cash bank account. जब ये दो अकाउंट बच गया है, बाकी सब क्लोज हो गया है, तब इंसॉल्वेंसी टच करने का। और उसके बाद सी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें कितना डिफरेंस है। उसमें से दो पार्ट होंगे, कुछ उसने पैसे दिए और कुछ वो नहीं दे पा रहा है। जितना दिया ले लो, कैश टू कैपिटल, और जितना नहीं दिया, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स ऑल। फिर नॉर्मल तरीके से अभी क्लोज करो। दैट्स सिंपल। क्लियर? चलो, कैश एट बैंक। आर यू गोइंग टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट? Yes, so there you will show this as opening balance, और एसेट है तो डेबिट साइड। दिस इज नॉट कैश इन हैंड, दिस इज कैश एट द बैंक। हमारा बैंक में पैसा पड़ा है, तो ये बैंक बैलेंस है, तो वी विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट। ओके, देन डेटर्स कहां जाएगा? वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर डेटर अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट साइड। सवाल ये है, डेटर्स का रियलाइजेशन डेबिट पे 16,000 जाएगा कि 15,000 जाएगा? यस, 15,000 जाएगा। कि 16,000? ओह यस, 16,000 जाएगा, not 15, 16. Or RDD will be transferred separately on the opposite side, realization credit. Then stock, plant and machinery and furniture. Are we going to prepare their account? No. So where will they be shown? Realization में जाएगा, and asset है तो which side? Debit side. And Rani's capital. Are you going to prepare Rani's account, capital account? Yes. So there you will show this as opening balance, or asset at the opening balance on the debit side. Coming on to the liability side now, creditors and bills payable. Are you going to prepare creditors and bills payable account? No. So you will have to transfer this to which account? Realization. Liability to which side? Credit side. General reserve. What does general reserve represent? Past का undistributed loss. और क्योंकि वो loss है, it has to be distributed. Sorry, past का undistributed profit है, liability है तो profit होता है। It is past undistributed profit, and since it is past का profit है, हमको इसको पार्टनर्स को बांट देना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी है तो विच साइड? क्रेडिट साइड। देन राजानीज लोन। 2 पॉइंट। पहला, ये पार्टनर है या नहीं है? तो फिर ये पार्टनर्स लोन हुआ ना, और पार्टनर्स लोन का अलग अकाउंट बनता है, यस और नो? यस, और उसमें ये अमाउंट डाल देंगे एज ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी है तो विच साइड? क्रेडिट साइड। अच्छा, अगर ये पार्टनर नहीं होता तो क्या करते? किसी और का लोन होता तो क्या करते? यस, तो फिर वो रियलाइजेशन क्रेडिट पे जाता। ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट्स। आर यू गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट? ऑब्वियसली। सो देयर यू विल शो दिस एज ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी है तो विच साइड? क्रेडिट साइड। मार्किंग्स डन? Markings done on the sheet. Okay.
सिर्फ ऐसा बोल दिया कैपिटल, सॉरी लोन, सिर्फ अगर लोन लिखा है तो फिर रियलाइजेशन क्रेडिट। किसका लोन नहीं मालूम, रियलाइजेशन क्रेडिट। The firm was dissolved on the above date. The assets realized as follows. Again and again, I keep on telling you, when they say assets realized, मतलब asset से पैसा आया, ठीक है। तो एसेट से अगर पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट। देखो एसेट बेच के पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एसेट जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, bank account we are going to prepare, asset account we are not going to prepare. Asset account has been, assets have been transferred to realization, so instead of asset account I will have to write realization account. For that, then creditors were paid 18,000 in full settlement and bills payable were paid in full. क्रेडिटर्स भी पे कर दिया, बिल्स पेबल भी पे कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मली लायबिलिटी पे कर दिया, तो अब वो हमारे क्रेडिटर्स नहीं रहे, तो उनको डेबिट, एंड हमने उनको पे कर दिया, तो पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। नॉर्मली दिस इज द एंट्री, but we are not going to prepare liability account. Liabilities have been transferred to realization account. So my entry now turns out to be realization to bank. Next is realization expenses. Now you have paid expenses, correct? So money is going out, credit what goes out to bank credit, and realization expense है तो realization account debit. Rani has become insolvent and was able to pay only 1800. उसके पास से लास्ट में सिर्फ 1800 मिला, तो पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट टू रानीज कैपिटल अकाउंट। Now prepare realization, capital and bank. I'm also going to prepare partners loan account, Rajani's loan account.
Ready? चलो then, let's begin now. सबसे पहले कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड 8,000. To balance brought down 8,000. Ready? Then debtors realization debit, RDD realization credit. Then stock, machinery and furniture realization debit. And last wala Rani's capital, opening balance on the debit side 3,000. Liability side, creditors and bills payable realization credit side. Then general reserve 2:2:1 में बांटना है. First line I will have to leave for opening balance of capital.
General reserve is how much? 6,000. 2:2:1. यानी 2/5, 2/5, 1/5. 6,000 into 2/5, 6,000 into 2/5, 6,000 into 1/5. After general reserve, you have Rajani's loan, 16,000. And then capital of Rajani and Rohini, 25,000, 10,000. Over. The assets of the firm realized as follows. Entry, bank account debit to realization account. तो bank debit and realization account credit. तो बैंक में डेबिट पे बी क्विक, एंड ऊपर रियलाइजेशन में क्रेडिट पे. Copy this. Debtors 9,000. Plant and machinery 26,000. Stock 14,000. Furniture 3,000. डन. और ये 52,000 इधर भी लिख दीजिए प्लीज. फाइनली ओवर. सेकेंड वाला, क्रेडिटर्स को 18,000 पे किया, बिल्स पेबल फुल पे किया. बिल्स पेबल कितना है? लुक हियर, 5,000 फुल पे किया. एंट्री रियलाइजेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट.
तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। चलो बैंक क्रेडिट। डन। Realization expenses 3000. Entry is realization debit to bank. रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर टू बैंक। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक क्रेडिट। डन। एंड रानी बिकेम इंसॉल्वेंट। उसके पास से सिर्फ 1800 मिला। आई टोल्ड यू इंसॉल्वेंसी का स्टोरी वी विल टच एट द एंड, नॉट नाउ। सो बिफोर दैट, नाउ व्हिच अकाउंट विल बी क्लोज्ड फर्स्ट? लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर। कुछ बोला नहीं है तो पे करने का कि नहीं करने का? करने का। कितना करने का? पूरा? यस। तो रजनी's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वी विल पे इन फुल। Rajni's loan account debit to bank account. जस्ट रिमेंबर, इन केस रजनी को कम ज्यादा पे करके सेटल किया होता तो रजनी के अकाउंट में बैलेंस दिखता लोन में, और वो डिफरेंस कहां डालते? इन केस रजनी was paid something more or less, then Rajni's loan account would have shown some difference.
Where will you transfer that difference? The difference will be transferred to realization account. किधर? किधर? realization. Okay. सभी लोग. Anyways, next up is realization. Before closing realization account, we have to check something. Kya? Whether all liabilities have been paid or not. There were two liabilities, creditors and bills payable, और दोनों पे हो चुका है. So we can close the realization account now safely. A total fast. Debit is 98,000, which is more. Because credit is only 58,000, 78,000. Debit 98,000, credit 78,000. So 20,000 का difference है. Now you tell me this is realization, profit or loss. Loss, and this will be distributed in the ratio 2:2:1. तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा. ओके. नाउ ये रियलाइजेशन में आपको क्रेडिट पे दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया, वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे है, तो कैपिटल में डेबिट पे आएगा. Now only two accounts are left, capital and bank. Now we can touch the insolvency part. Rani is insolvent. Rani के capital account में debit total is how much? $7,000, and credit total is only 1,200. So the difference is 5,800. बराबर है, हमको उससे 5,800 लेने का. If you see the last point, उसने हमको सिर्फ कितना दिया? 1,800. So how much is not received? The remaining 4,000. जो नहीं मिला ना, उसको बोलता है कैपिटल डेफिशिएंसी. क्या बोलता है? कैपिटल
efficiency. Is that okay? नाउ जो मिल गया उसका एंट्री पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट टू कौन दिया रानी तो रानी इज कैपिटल और जो नहीं मिला उसका एंट्री सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट क्या सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट उससे पहले सॉल्वेंट कौन है राजानी एंड रोहिणी और आपस में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 नाउ टेल मी 2:2:1 में कौन इंसॉल्वेंट है 2 या 1 1 तो वो 1 को हटा देंगे तो अभी क्या रेशियो बचता है रिमेनिंग पार्टनर्स का 2:2 तो ये जो 4000 है ना वो 2:2 में बांटो एंड द एंट्री इज सॉल्वेंट टू इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन कौन है राजानी सॉल्वेंट है डेबिट सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू insolvent partners capital account now pass these two entries first entry is bank debit to Rani's capital credit 1800 bank debit to Rani's capital account 1800 bank debit and Rani's capital account credit
And second entry, Rajani debit 2000, Rohini debit 2000, and Rani credit 4000. That's all. Selling like 9,624, 2,02,803. These are 2,02,000, 3,779. Next, now close in the normal fashion. Done.
That's all. Have you copied the working note? Okay then. Chalo, bye bye. See you. Take care. Practice this chapter well enough now. Your revision for this chapter is over. So you are finally through with this chapter. Practice the classwork questions well enough.